All right, all right, all right. मानस क्या बोलता है? सुना तूने कुछ? पढ़ा कुछ? हाँ, हम लोग अभी अंकित के साथ स्ट्रीम ही कर रहे थे एंड वी गॉट सम न्यूज़ एंड वी स्टार्टेड रीडिंग इट एंड देन वी डिसाइडेड कि ये लाइव करना ही है हमें। हम्म, अभी खबर ये आई है कि मेडिकल कल लाइंड अप है डार्विन नूनेज का और निधि 64 मिलियन पाउंड्स अप फ्रंट है। जो yeah, 80 का चल रहा था, ये शायद से जो भी 80 मिलियन यूरोस था, बट पॉल जॉयस के ट्वीट के हिसाब से 64 मिलियन पाउंड्स प्लस 8.5 मिलियन बेस्ड ऑन व्हाट वी विन एंड हम्म, 12 odd million based on the appearances. बट निधि द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट है 2028 तक। मतलब I think this just shows how confident Klopp is about this guy. You know, that's the most important. So yeah, this is what Paul Joyce says: 64 million pounds initial fee, add-ons of 12.8 million on appearances and 8.5 on team success. Liverpool Yeah. preparing medical tomorrow. Expectation everything finalized today. Nunez currently in Madrid and won't sign a 6-year deal. Wow. Okay. 6-year deal is a that's a big number, but yeah, honestly, uh, that just shows कि भाई कितना confident है क्लॉप. मतलब क्लॉप कितना sure है इसके बारे में. But 6 year deal suits us only, na? Like, uska wage will be, what do you say? From whatever I've read, apparently 98,000 pounds per week दे रहे हैं. So, Hmm. like even when we decide to give him a new contract if he's playing well, let's hope Yeah. that happens. तो वो 2-3 साल के बाद भी होगा तो we still will have 3 odd years on his contract. So I think it's brilliant. It's a brilliant piece of news and good start for Julian Ward, Nidhi Carvalho, Luis Diaz, and Nunez, right? यार तो जब हमने ये मतलब हमने जब स्टीफन के साथ बाबू यागू के साथ जब हमने ये किया था, हाँ, हमने जो वीडियो किया था उसमें उसने बोला था कि भाई Julian Ward's a lot of his experience comes from the Portuguese league और yeah, Portuguese players. तो अभी जैसे yeah, फैबियो कार्वालियो पोर्चुगीज प्लेयर है, न्यूनेस पोर्चुगीज लीग से आया है, लुइस डियाज पोर्चुगीज लीग से आया है. yeah. तो वो हमको देखने को मिल रहा है. सो द मैन नोज हिज स्टफ. Uh, but yeah, man, good start for Julian Ward. I'm still waiting for that official confirmation. हालांकि जॉयस ने बोला तो it's as good as official, but I'm still waiting for him with a picture of him with the various medical instruments. Yeah, वो आई थिंक कल ही होगा बिकॉज अपेरेंटली ही इज कमिंग टुमारो. सो वो यू नो हाउ द क्लब इज निधि, स्पेशली आफ्टर नबील फकीर सब अभी तो वी आर वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट वी डू, हाउ वी डिस्क्लोज कौन आ रहा है कैसे आ रहा है. सो अपेरेंटली कल वो लैंड कर रहा है लिवरपूल में. गाइस आई नो ये काफी हम लोग पॉइंट पर पॉइंट मिनट पर मिनट न्यूज दे रहे हैं, बट जो भी पड़ा है उस हिसाब से कि ही इज लैंडिंग टुमारो इन लिवरपूल एंड कल मेडिकल वेडिकल होगा, अपेरेंटली सब कुछ हो जाएगा. थैंक यू एक जोजे. क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है मानस. What are your realistic expectations in his first season? पहले वो Mm-hmm. honestly I have not thought about it. I have not thought about it. See, it depends on so many different things. If I think about it, whether we play a 4-2-3-1 या 4-3-3 खेले, अगर 4-3-3 खेल रहे हैं तो उसको सर्विस अलग मिलेगी. अगर 4-2-3-1 खेल रहे हैं तो शायद से उसके लिए केटर बेटर होगा. बट निधि मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, डार्विन न्यूनेस के अराइवल से ना Mm-hmm. आपके ट्रेंट और रॉबो का असिस्ट काउंट बढ़ सकता है. हाँ, बिकॉज बिल्कुल हमारे बढ़ पास सकता है. ये जो एक क्रॉस आता है ना ऐसे, जो हेड हाँ. मारने की, जोटा के अलावा ऐसा कोई है नहीं प्लेयर जो हम टारगेट कर सके अभी. आई थिंक ही कुड बी दैट प्लेयर. हाँ, मतलब obviously यार देख, that's I think Klopp
ने कभी भी ऐसा, जब जब से वो लिवरपूल में खेला, इज नॉट प्लेड विद अ टिपिकल नंबर 9 या lineup, राइट? अभी इफ यू नो, देखने के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा कि हाउ डज ही इनकॉर्पोरेट अ नंबर 9 इनटू द टीम। ऑब्वियसली हाँ, थोड़ा ट्रेंट और रोबो का रोल थोड़ा चेंज होगा। क्या क्या साला फिर से ओवरलैप्स करेगा ट्रेंट के साथ? विल दोस क्रॉसफील्ड पासेस स्टिल बी अ थिंग? इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए। एक कमेंट आया तेरे लिए। Manas looks 20 years on YouTube and 30 on TV. that's because I am 10 years old in reality. अरे यार, I don't know what to say to that. Anyway, but thank you for thinking I'm 20. David Antau is in the chat. So David has a Chelsea fan channel. You guys should all go and follow him. He says, "I'm curious to see how he does in the Prem, but seems like a good signing. Hopefully, he'll still finish behind Chelsea." Idea वो नहीं है. The idea is to challenge Man City again, and hopefully that happens. स्टिल मतलब ये क्या, हम लोग तो लास्ट ईयर वी फिनिश्ड अबव चेल्सी ना, तो स्टिल अबव चेल्सी नहीं नहीं कैसे नहीं. होगा? I'm saying the idea is to still challenge Man City for the नहीं नहीं title. नहीं, मैं डेविड के कमेंट पे बोल रहा हूँ, Oh, होपफुली यू विल हाँ, स्टिल फिनिश बिहाइंड चेल्सी। माय पॉइंट वाज कि लास्ट सीजन तो हम लोग चेल्सी के ऊपर फिनिश किए, बट आई गेट योर उस पॉइंट डेविड, आई हाँ, आई आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, बट उसके पहले भी we finished above Chelsea या in या सो 2021 also. आई थिंक वी आर ओनली गोइंग टू इंप्रूव यार, दिस साइनिंग कैन ओनली मेक अस बेटर। मेरे हिसाब से ये साइनिंग हमें एक और डायमेंशन देता है फॉर श्योर Hmm. in the attacking third। ये साइनिंग could also change कि हम लोग, हमारा मिडफील्ड कैसे हो। अब काफी लोग का मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, वो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर चाहिए। Hmm. काफी लोग वो बात कर रहे हैं कि डू वी नीड अनदर मिडफील्डर, बट अगर हम लोग, थैंक यू समीर, अगर हम लोग वो 4-2-3-1 सोचेंगे खेलना, तो फिर दो ही प्लेयर चाहिए रहेंगे मिडफील्ड में। सो अगेन इट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड द फैक्ट दैट वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, इफ योर्गन क्लॉप को लगता है कि वी शुड साइन समवन 64 मिलियन पे पाउंड, Hmm. 64 मिलियन पाउंड्स वी शुड स्पेंड फॉर अ स्ट्राइकर, जो उसने कभी नहीं किया एट लिवरपूल सो फार, तो मेरे हिसाब से वी शुड बी एक्साइटेड, वी शुड बी वेरी एक्साइटेड। Yeah, yeah, yeah. समीर यार, थैंक यू सो मच। समीर से मैं गोवा में मिला था। अच्छा, I hope you're doing well, Sameer. Um, okay, there are a few. कैल्विन रामजे की क्या न्यूज़ है, मानस भाई या निधि भाई? कैल्विन रामजे के रिपोर्ट्स आ रहे हैं अभी तक। किसी रेप्यूटेड जर्नलिस्ट ने नहीं बोला है कैल्विन रामजे के बारे में, बट अपेरेंटली उसके बारे में भी न्यूज़ आ रही है कि वी आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन कैल्विन रामजे, व्हिच इज इम्पोर्टेंट। बट मानस, एक चीज मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन पहले भी आया था। हाँ, अ, यार लकी वीडियो, हाय, शाउट आउट टू यू फ्रॉम बैंगलोर एंड मुंबई। एक एक क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू थिंक? एंड पर्सनली आई थिंक दैट इट्स अ लिटिल प्रीमैच्योर, बट जस्ट आस्किंग यू, जोटा का क्या रोल होगा अभी? बिकॉज वी वर थिंकिंग जोटा प्लेस थ्रू द मिडिल। हाँ, नो बट आइडिया। मेरे हिसाब से जोटा का क्या रोल होगा? देख, जोटा विल आइदर, Jota can play three positions or should be playing one of the three positions. Left wing, either striker, या फिर if we play 4-2-3-1, the number 10 role, जो Carvalho slash Jota होगा। I don't want to see Jota on the right personally। मेरे हिसाब से Salah is the only one who can play there, or slash Elliot। I would rather see that happening। Uh, वही बात है निधि, अगर हम लोग कुछ ट्वीक करेंगे तो फिर चार अटैकर्स को खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो जोटा को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर रोल किसी का कम होगा, वो मेरे हिसाब से बॉबी फर्मिनियो का होगा। बट मैं तो ये टोटली एक्सपेक्ट करता हूँ फर्मिनियो विल स्टे दिस सीजन, एंड आई मीन लाइक वी हैव सेड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स कि ये
वर्ल्ड कप यार, हमने वीडियो भी किया, प्लीज गाइस डू चेक इट आउट. सो आई थिंक सबको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी. जोटा तो पोर्चुगल के लिए भी खेलेगा. आई थिंक जोटा विल प्ले. He has three positions where he can play: up top, left, or the number 10 role. मेरे हिसाब से जोटा को गेम टाइम का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. But I'm very excited. I think 12th July को is the first preseason game, bro, against Manchester United. 12th या 15th जुलाई को. So उसमें तो वो काफी प्लेयर्स नहीं रहेंगे, बट our season begins very very quickly. On the 30th of July we play Manchester City in the League Cup. So तब तक दिख जाएगा कि what do we want to do. I think 30th जुलाई को दिखेगा कि कौन क्या है कैसा है. अभी तो इट्स वेरी वेरी अर्ली टू से कि क्या रोल्स सबको मिलेंगे मेरे हिसाब से. हाँ, definitely. And I also think that, Jota will be used as a player who's rotated with the front three, front two, जैसा भी हम लोग front four जो भी खेले अभी, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि what happens to the fabled front three. Does it become a front four? Does it become a front two? What happens there? तो यार काफी इंटरेस्टिंग होगा, मतलब मजा आएगा. बट जोटा, आई थिंक ही स्टिल हैज अ बिग फ्यूचर एट लिवरपूल. नो डाउट ही विल डू वेल. एक कमेंट लेते हैं. वी डू ग्रेट बिजनेस. वी साइन डार्विन फॉर 75 मिलियन यूरो एंड 25 मिलियन एड ऑन व्हिच आर लॉजिकल अनलाइक बायन. बायन की बात कहां से आ गई यहाँ पे? एंड योर थॉट्स ऑन सेडन साउ. आई हैव नेवर सीन सेडन साउ प्ले. Manas, have you seen Seton South play? I have no I have idea no what is. idea. I don't even know I whether he's a, Yeah. like, yeah. All I know is, and I read a report, and I don't even know is if this is true or not. Is that Naby Keita ने बोला था कि इस प्लेयर को हमको साइन करना चाहिए, right? Concept. Seydon Sow, he's a Guyanese player, and अच्छा, okay. sorry, not Guyanese. He's a Guinean. He's a Guinean Guinean, player, okay. Okay. and शायद से नाबी केटा ने बोला है कि इसको वी शुड लुक एट. तो पता नहीं, बट अगेन मिडफील्ड आई. वही मिडफील्ड का मेरे को वही. देख, अभी मिलनर है, हेंडो है, थियागो है, फेबिनो है, नाबी केटा है, कर्टिस है, फैबियो कार्वालियो है. काफी लोग आर सेइंग इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ इम्पोर्टेंट इज द नंबर 8 और बॉक्स टू बॉक्स. I don't know at the moment how we going to play. I यार have no idea. हाँ, मतलब काफी इंटरेस्टिंग होगा ये प्री सीजन. आई थिंक विल बी इज लार्जली अवेटेड. देख के काफी मजा आने वाला है. हाँ. साहिल इज सेइंग आई थिंक लिवरपूल ने नूनेस को ओवरपेड किया. 40 और 50 मिलियंस का प्लेयर है वो. क्या लगता है आपको? देखो यार साहिल, the market is as such. If you look at the big transfers that have already happened this season, if you look at Chouamini, for example, for Real Madrid, that deal started at 50, it closed at 100, right? And who decides कि एक player कितने value का है, right? So it is decided by the fact that सामने वाली टीम को कितनी जरूरत है, और जो the selling team, how you know how much they are desperate to sell, how much of a need of money they are in, right? um, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि देयर इज नो वे. एंडी रॉबर्टसन 8 मिलियन का प्लेयर था. एंडी रॉबर्टसन, लुक एट हिम, आई मीन ही शुड बी 80 मिलियन. बट अगेन दिस डिपेंड्स. तो मतलब वो हम कैसे बोल सकते हैं कि कौन कितने के लायक है? देखो, हम लोग एक और चीज ये है कि देखो, एफएसजी ने बहुत क्लॉप को बैक किया है विद आर लुइस डियाज साइनिंग एंड इवन दिस साइनिंग, पोटेंशियली द न्यूनेस साइनिंग. But at the end of the day, they're still FSG. They will still, like, they will not go overboard, guys. If Klopp go, and I don't even think Klopp is the type of guy who would now say he will push his luck too much, because अगर Ramsey sign हो रहा है, then Fabio Carvalho हो गया है, and then ये Darwin Nunez का signing होगा. I think that I personally feel that will be that, unless Naby Keita decides to leave or something like that happens. Because we have Naby, we have Milner, we have Hendo, we have Thiago, we have Fabinho.
Like again, I'm mentioning these names. We have players, we have bodies. Sure, Yeah. injuries will be part and parcel, but again, if we decide to make the transition to a 4-2-3-1, I don't know how will or how many players will need for those two, because of course 4-2-3-1 में वो जो बीच में Carvalho होगा या फिर Bobby होगा या Jota होगा. So I mean, obviously more numbers help, but Nidhi, five substitutes, huh? 5 सब्स्टिट्यूट्स एंड इस सीजन से तो ऐसा भी लग रहा है कि क्लॉप इज इवन टेकिंग द कप सीरियसली. तो क्या पता, मतलब मे बी नेक्स्ट सीजन भी हम लोग कप्स को सीरियसली ले, तो वो भी हो सकता है. तो काफी हाँ. इंटरेस्टिंग है. um, Manas bhai, with all due respect, in the last team you said Nunes, Carvalho, and Ramsey will be a 10 out of 10 window. Don't you think we need a Bissouma mold midfielder and an understudy to move? We have to go big. So my Deva, my reply to that is, if we sign Basuma, okay, and if we sign an understudy to Mo Salah, where and how will we accommodate and play them? Like, is my I understand you say you want an understudy for Salah, because जब Salah नहीं रहेगा वो right में same impact नहीं है. I totally agree. Basuma किधर खेलेगा भाई? Like, even if we play a three, Fabinho, Thiago, Hendo/Keita is the go-to midfield. I know we need bodies. I know we have to go big, but then at the moment, I don't see us genuinely going too heavy in the midfield. But that being said, Nidhi, if the reality is that we apparently were in for Chaumini na 50 million, Hmm. so which also goes to show शायद से we are into हाँ, मतलब signing मैं that. वही बोलने वाला था कि अभी तो विंडोज स्टार्ट हुआ है यार. मतलब अभी Yeah. तो देखना पड़ेगा कि व्हाट आर वी डूइंग, सच में किस पे इंटरेस्ट है, क्या है. वी आर फॉरगेटिंग सम प्लेयर्स लाइक टाइलर मॉर्टन माइट गेट मोर चांसेस दिस सीजन. वो भी पॉसिबल है. काफी चीजें हैं. Uh, what happens to Ox now? Ox most likely will be sold if we get a good offer, and it looks like it's a good move for him as well. So that's what I think happens with Ox. We are waiting for a good I offer. think Ox, Menamino, Mane, Nico Williams, and Nat Phillips say we are trying to get 100 million. That's the target that I think Julian Ward has, to sell these five players and get 100 million types, so that we are able to get the deals done on a net for Ramsey, Carvalho, and Nunez. This is what I feel we are aiming for. I could be wrong, but मेरे हिसाब से ये है. एक एक कमेंट मेरे को लेना है. In 2016, Klopp says he would never do 100 million signing 6 years down the line. He signs Nunes. Isn't he your biggest hypocrite? You can argue football market has changed now, but it was changing then also. नहीं प्रथम, 2006 एक टर्म होता है. आप थोड़ा उसको गूगल करना, उसके बारे में विकिपीडिया पढ़ लेना. उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन. ठीक है. एक ट्रांसफर हुआ था, उसका नाम था नेमार टू पीएसजी. That changed the world, right? When Klopp said 100 million in 2016, the context of how many 100 million signings were there in 2016? One, one, right? Maybe two. उससे ज्यादा नहीं. I think only one. Even Ronaldo went for 80 odd million, right? Klopp hypocrite नहीं है. आपको इकोनॉमिक समझने की जरूरत है. ठीक है. Someone has said Thiago 31, Hendo 31, Milner 33. Asad Mullah has said that, yeah, Asad, I agree with you. This is something which Liverpool has to address. Uh, मैं सिर्फ यही मेरा पॉइंट ये है कि मे बी ये वो ट्रांसफर विंडो नहीं है जिधर वो हम एड्रेस करें, because Naby Hmm. Keita is also in his 20s. I think Fabinho is in his 20s as well. अगर आप मेंशन ही कर रहे हो मिडफील्डर्स, तो एलियट भी है in his early 20s या teens. Curtis is 21. वो भी मिडफील्डर्स है ना. So Naby, Fabinho, Curtis, एलियट भी खेल सकता है मिडफील्ड में.
तो वो लोग भी हैं, बट आई एग्री, टोटली एग्री कि थियागो हेंडो मिलनर का हमें शायद से मिलनर 33 से भी ज्यादा आई थिंक, बट वी नीड टू मिलनर इज प्रॉबेबली, 36. या मिलनर आई इज थिंक थर्टी सिक्स वी उधर एक ट्वीक साइकिल हमें बदलना है, जैसे हमने किया है। हमने न्यूनेस साइन किया 22 का, जोटा साइन किया 25 का, हमने लुइस डियाज साइन किया जो 22 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो वी हैव गॉट दैट राइट। अभी रैमजी का वी गॉट इट राइट, लेफ्ट बैक प्लेस इज सॉर्टेड, कोनाटे इज 22, Gomez is 25, we might give him an extension, so the team is building for the future and for the present। ये एरिया है जो फ्यूचर के लिए हमें मोल्ड करना पड़ेगा सर, आई टोटली एग्री, बट प्रेजेंट के लिए कोई स्ट्रेस नहीं है। थियागो एट 31 एंड हेंडो एट 31 आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, जो उनका काम है। सो आई एम नॉट टू स्ट्रेस एट द मोमेंट। यार ये क्रूज मॉडरिच कैसेमीरो वाला सिचुएशन, कैसेमीरो 30 है, क्रूज 32 33, मॉडरिच 35 36 है, जीते ना चैंपियंस लीग। तो these are just players in the 30s man, come on, and these are fit players जो योर्गन क्लॉप के अंडर खेलते हैं। These are not your average 30-year olds playing in other teams, they are playing for Jurgen Klopp's Liverpool, which goes to show, yes, we need fresh legs, but they are fit, that's why they are there। um Guys, 97 people watching, please do like the video यार, and if you हाँ, are new to the channel please subscribe कर लो मैंने इन द मॉन्ग पे, अच्छा लगेगा। बट यार एक एक क्वेश्चन है मानस, एक काफी हाँ चीजें बोली हैं लोगों ने, और आई हाँ थिंक नो इवन इन द लास्ट टीम हम लोग बोल रहे थे ये कि इज दिस अ स्टेटमेंट साइनिंग टू मैन सिटी साइनिंग हालैंड, इज दिस अ या स्टेटमेंट साइनिंग, समथिंग लाइक दैट? यस I think it is, but it is also, it is also because Klopp, और Klopp वैसे साइन करता नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमको एक दिखाना है इसलिए हमने साइन कर लिया। आई थिंक ही नोज वेरी वेल हाउ नूनेस फिट्स इन। आई थिंक माने के बारे में वी न्यू बिफोर हैंड कि माने इंटरेस्टेड है शायद से जाने के लिए। अभी ऐसे बोलने में आ रहा है कि अपेरेंटली एनीथिंग अराउंड 35 मिलियन, ऐसा सुनने में आ रहा है, अराउंड 35 मिलियन इज लाइकली टू बी एक्सेप्टेड, है ना? या तो वो मतलब काफी लाइकली है कि माने छोड़ के जाएगा। तो यू नो आई थिंक इट इज अ वेरी वेल थॉट आउट प्लान, एंड ये बस एक इस समर में हमने प्लान नहीं किया। स्टेटमेंट साइनिंग यस, बट इट हैज बीन वेरी वेरी वेल थॉट आउट। और एक चीज काफी लोग बोल रहे हैं चैट में, हालैंड भैया देखो, एक स्काई स्पोर्ट्स पे न्यूज आई थी, एक स्काई स्पोर्ट्स पे क्लिप है कवेस कॉल की, उसको देख लो आप। हालैंड हैज कॉस्ट मैन सिटी अ लॉट ऑफ मनी, राइट? उसके वेजेस हुए कम से कम 300 350। दिस गाय माइट नॉट इवन बी हाफ ऑफ दैट। तो no, we are apparently playing 98K per week। हाँ, सो सो मतलब you can get you can hate Klopp by all means, but there is a very good explanation for everything. देख, um, मैं मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लिवरपूल ने पैसा खर्चा किया है वैन डाइक पे, हाँ भाई, एलिसन उसमें पे, कौन मना कर रहा न्यूनेस पे, नाबी कीटा पे, फेबिन्यो पे, किया है, हाँ किया है। बट जो क्रेडिट जो क्लॉप को इधर मिलना चाहिए ना, कि आपके सपोजिटली आपके बैंक में अगर 100 मिलियन और आपको बोला कि आप 100 मिलियन के प्लेयर खरीद सकते हो, फिर आपको बोले कि भाई आपके बैंक में 20 मिलियन है, है? अभी आपके पास जो आसपास है वो एक्सचेंज एक्सचेंज करके आप अपनी टीम को रीमॉडल करो। सिंपल सा एग्जांपल है वो योर्गन क्लॉप, और मैं किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ योग। अभी अगेन सब लोग, काफी लोग बोलेंगे जो भी है जैसा भी है, बट अगर हमारा नेट स्पेंड इज अगेन इन द माइनस, if we get 100 million for the 5 players that I mentioned, and if we sign just 3 players in 90 odd million, तो वापस Coutinho money has done it again for us, so हाँ हाँ, इट इज, हाँ बोलते रहो, इट इज कुटिन्यो मनी। हाँ, वो अलादीन का चिराग है, फर्क नहीं पड़ता है।
प्रथम, मैं which is वही the बोला ना, प्रथम, दैट्स माय, आई मीन, तो प्रथम लेट, उसको छोड़ दे, वो वी नो व्हाई ही इज हियर, उसको छोड़ दे. ओ Which is अच्छा, the oldest player to play in the Premier League this season? I think it is Thiago Silva, if I'm not wrong. I think it is Thiago Silva. Uh, अच्छा, I think he'll be 38 this year. I या, think he is. We can, Pratham, but I don't want to explain it to you because you are clearly not here for a discussion. साहिल says लिवरपूल की स्काउटिंग बहुत सही है यार. आप कहाँ से इतने टैलेंटेड प्लेयर सर्च करते हो रॉबर्टसन? देखो यार, um, हम ये ना इसके ऊपर बहुत काम किया है लिवरपूल ने. वी हैव, यू नो, बहुत दिन से, जब से मतलब आपको पता है, मतलब वी हैव गॉट न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स ऑन आवर बोर्ड. उसके बारे में भी बाबू यागू के साथ जो वीडियो है उसमें हमने बात की है. तो ये बहुत दिन से इसके ऊपर काम चल रहा है, राइट? तो इसलिए वी आर एबल टू सक्सीड सो मच. बहुत ग्राहम बेल, आगा, एग्जैक्टली. बेन फॉस्टर अनफॉर्चुनेटली रेलिगेट हो गया यार, सो हाँ. I don't think. I mean, if he signs probably for someone, then yeah. वो ये तो यार बड़ा ही, यार. I mean, I think Abhishek. The thing is that I think Salah will stay. Whether he signs a new contract is a different thing. We हाँ, can't ये let सीजन Salah. तो वो रहेगा. हाँ. I don't think, मेरे हिसाब से हम साला माने दोनों को एक ही ट्रांसफर विंडो में नहीं जाने दे सकते, कंसिडरिंग ओरिगी जा रहा है शायद से, चेम्बरलिन चले जाएगा. सो वो जो फेमिलियरिटी है क्लब में एसोसिएटेड, इतना चेंज नहीं कर सकते. श्योर डार्विन नूनेज अच्छा प्लेयर है, श्योर हमको डियाज का प्रॉपर रूप दिखेगा बिकॉज प्री सीजन के साथ जो भी होगा. साला विल स्टे, आई होप ही साइंस अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बट साला विल स्टे मेरे हिसाब से. ही विल स्टे नेक्स्ट सीजन फॉर श्योर. आई थिंक मतलब काफी उसके बारे में बात भी हो रही थी कि ही वांटेड क्लॉप टू एक्सटेंड, सो क्लॉप हैज एक्सटेंडेड. सो या, एक दो लालची है कमेंट्स और इधर. ले. हाँ, लाला है इधर, लाला के कमेंट्स है. लाला खाली कांग्रेट्स बोल रहा है. फैबियो करवालियो कुटिन्यो के पोजीशन में खेलेगा क्या? तो फिर यार देखो, फैबियो करवालियो के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया है with Vic, so you can go and check it out. Basically, Carvalho will be played in a limited role. उसको वो, he won't start a lot of games. He will play in cup competitions, या फिर he'll be rotated. That's the idea. In terms of his position, he's more on the left side rather than maybe in the typical argument of the Coutinho role. But देख क्या कर सकते हैं. Nidhi Manas, what do you think Luis Diaz sustained for the whole season? For the first 60 minutes is supercharged, but यार ये कहाँ से आया है यार मानस? ये क्यों बोलते हैं लोग ये? How this is not true, is it? कि वो सिर्फ 60 मिनट्स खेल सकता है. आई आई मीन, आई एम श्योर परश ने कुछ देखा होगा, दैट्स व्हाई उसका वो ओपिनियन है ऐसे. नहीं, ये बट मैंने बहुत बार सुना है, बट आई डोंट एग्री विद दिस. मतलब देख, maybe there might be some truth in this. I don't know, but I'm leaning towards your side on this. I don't agree with this, but एक और बात समझनी पड़ेगी कि लाइक जनवरी में साइन किया है, द एंड ऑफ जनवरी, पोर्टो का स्टाइल ऑफ प्ले, फिर देन सडनली योर्गन क्लॉप का लिवरपूल, जहां आप स्ट्राइकर होके भी आपको डिफेंड करना है, प्रेस करना है, गेट द बॉल बैक. सो शायद से वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था. मे बी यू सॉ दैट, मे बी यू फील दैट थक गया वो जल्दी, बट अभी आई थिंक ही इज 22, ही इज फिट. With the preseason, I think you will see a better version of Luis Diaz. Uh, I think there are quite a few players who can do with a good preseason. हमने, and I also think one of the players maybe is Jota.
I'll tell you why. Because हमने हाँ जोटा साइन किया था, फिर उसके बाद यूरोज आ गया था, ठीक है, और फिर यूरोज के बाद वो थका हुआ था, फिर वापस आया. सो आई थिंक जोटा ऑल्सो विल हैव अ ग्रेट सीजन नेक्स्ट टाइम अराउंड मेरे हिसाब से, बिकॉज उसको प्री सीजन मिलेगा. काफी प्लेयर्स को प्री सीजन मिलेगा इस बार लिवरपूल के साथ. सो या आई थिंक लुइस वील सी द बेस्ट ऑफ लुइस डियाज एंड जोटा नेक्स्ट सीजन. यार देखो, एक ये भी क्वेश्चन है. फिनिशिंग इज क्वेश्चनेबल. This is a guy who has last season he has played in 55 games. This includes if you're talking about purely Liverpool, तो उसने 11 मैचेस खेले हैं, उसमें से दो वो सब्स्टिट्यूट था, उसमें उसने 4 गोल मारे हैं. He has 3 assists. In the Champions League, he has played 4 games. He has 2 goals. He has 1 assist. Right? इन लीग कप में उसने एक मैच खेला है, एफए कप में उसने 2 मैच खेले हैं, उसमें उसका गोल और असिस्ट मिला है. This is a guy who's come from just a different league into a new team without any preseason. You guys are being way too, early in judging if his finishing is good or not. उसना उसका एक भी प्री सीजन नहीं, उसने प्री सीजन नहीं हुआ है. उसने ये he doesn't speak English, right? He has these are things that affect a player's performance. And even then 55 performances, अगर purely Liverpool की बात करें तो he has still scored a lot. So I don't know what is the expectation, but there is context to as to why. And he's still not a bad finisher, so I don't agree with it. He's not a bad finisher at all, right? Every chance cannot be converted. You look at any player in the world, it, every there are few players who are more clinical, and I think Luis Diaz will get there as well, but let him have a preseason. I think he's not polished Huh, at the exactly. moment. So when I say कि वो शायद से polished नहीं है, that means every area में वो fine tuning है जो योर्गन क्लॉप करवा देगा. योर्गन Exactly. क्लॉप का बेस्ट थिंग क्या है ना, he makes योर्गन क्लॉप and his team, just not योर्गन क्लॉप and his team make वर्क टुवर्ड्स कि वो हर एक प्लेयर को कैसे बेटर कर सकते हैं, और लुइस डियाज भी बेटर होगा. तो अगर आपको लगता है, which is a fair opinion, that's your opinion, if you feel that his finishing can improve, I think it will improve, because, like we have mentioned, preseason, everything. I think his work rate, his pressing, his movement off the ball, सब कुछ improve होगा under uh, Jurgen Klopp with the preseason. 100%. 100%. देखा मैंने. Henderson this year, last season, absolutely not. Henderson has signed a contract last season. Absolutely not. Henderson is मतलब काफी important player है हमारे system में. Um, he has, he has had games where he's not that good, but he has also had games where he was absolutely brilliant. So absolutely not. देखो, like Henderson, James Milner, maybe eventually Van Dijk, I hope, Hmm. will become the players ना जो आपको ऐसे लगेगा क्या इसका लास्ट सीजन है, क्या इसका लास्ट सीजन है, क्या इसका लास्ट सीजन है. They will be pivotal in our team. आज लास्ट सीजन तक यार, जब हेंडरसन नहीं रहता था टीम में, हमें वो लीडरशिप दिखता था मिसिंग है. हाँ. 2-3 गेम ऑन द बाउंस नहीं थी. आई थिंक इट वाज इन मार्च where Hendo came on off the bench. I think consecutive games he came off the bench and he settled things and we got the result. That is Yeah. what Henderson is all about. अब Henderson Kevin De Bruyne तो है नहीं जो वो मतलब ऐसे हाँ, आकांक्षा it's है. Henderson is technically not uh, Thiago either जो वो ऐसा like Henderson is Jordan Henderson. I think as Liverpool supporters we need to learn to love him and respect him for that. यार, he has got us the Champions League, he's got us the Premier League, he's got us all these trophies. Yeah, let's just give Henderson a bit of respect. I'm not saying कि ये बंदे ने नहीं किया, but I think just need to love him for who he is. absolutely, and he deserves all the love and respect. यार देखो माने जी, नहीं यार, इग्नोर कुछ नहीं कर रहे हैं. चैट ज्यादा आ रहा है तो हम अपनी भी बात कर रहे हैं ना उसमें, तो इसलिए नहीं होता है. तो
मतलब आप हाईलाइट कर सकते हो चैट को, मतलब आई थिंक स्टिकर से या इससे तो लेंगे आपके चैट्स, ले रहे हैं, बट थोड़ा हम लोग अपनी बात भी कर रहे हैं, इसलिए इग्नोर कुछ नहीं कर रहे हम लोग। साधु वंस जी आप नूडल्स। तो क्लब लेजेंड हो। साधु जी आप जा रहे हो छोड़ के, हमें हमें ये दर्द है। फर्स्ट ऑफ हाँ। ऑल 100 रुपए के लिए धन्यवाद, बट आप छोड़ के जा रहे हो, हमें यही ये सोच के ही बहुत बुरा लग रहा है। आपके वजह से ये लिवरपूल का रेवोल्यूशन शुरू हुआ अंडर योर्गन क्लॉप। साधु जी हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, कभी नहीं भूल सकते। सही बात है। Shanti says, once Luis Diaz understands Robbo, it's game over for the league. Yeah, they already have a brilliant understanding, and that is great to see, right? I mean, itna kam time. Do you see Konate starting ahead of Matip in the near future? I think in a lot of games at Champions League, in all three finals, I think, not the League Cup final, but in the FA Cup and the Champions League, he started ahead of Matip. So, ये तो we have started seeing already. साधु माने का कमेंट लेगा। हाँ है। अच्छा। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। हाँ यार, आपको कैसे भूल सकते हैं हम लोग। मंजिल में बिल्कुल। तेरी। हम्म, तो आपको कैसे हम भूल सकते हैं, मतलब लिवरपूल फैंस के लिए तो आप क्या ही अभी चीज तो है। देखना यही बंदा या बंदी जो भी कर रहा है, 5 मिनट नूनेज के बन। अंदर डार्विन नुनेज बन के आएगा, देखना अभी। हाँ। हाँ। फ्लाइट मतलब फ्लाइट जस्ट बोर्डिंग माय फ्लाइट ऐसा कुछ लिखेगा, देख। people were expecting Haaland versus Mbappe, Haaland versus Nunes came out of nowhere. uh, यार देखते हैं यार, मतलब मैन सिटी स्टिल दैट्स द टीम टू बीट। तो देखते हैं यार, मतलब लेट्स होप नूनेज डज स्टैंड आउट। सादियो माने बोलता है, श्रद्धांजलि स्ट्रीम करोगे ना भाई, मर थोड़ी रहे हो आप। एक बोल रहे हैं भाई साहब कि लिवरपूल को नॉन यूरोपियन प्लेयर्स लेना चाहिए, सबकी बैंड बजी हुई है नेशन लीग से। यार मतलब इट्स नॉट अबाउट यूरोपियन नॉन यूरोपियन, इट्स मतलब फिट होना चाहिए ना, मतलब सिस्टम में फिट होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो वही है। गाइस पहली बात 120 जन देख रहे हैं, थैंक यू। वीडियो लाइक कर दो यार, 81 लाइक्स है सो फार, 100 करवा दो, अच्छा लगेगा। सॉरी निधि। हाँ। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल यार। Manas, this question: Fabinho is the most underrated player in the Premier League previous season. मेरे ही हिसाब वाज से नॉट तो इन। हाँ, मेरे हिसाब से तो सॉन है सबसे अंडररेटेड लास्ट सीजन। अरे हाँ बट भाई। सो लास्ट ईयर 3 प्लेयर अंडररेटेड थे। सॉन, फेबिनो। मैं बोलूंगा बिकॉज आई थिंक लिवरपूल फैंस appreciate him, maybe the others don't as much as we do. I'm not saying Fabinho is not appreciated by others, but शायद से not as much as we do. But और एक है रॉड्री। हाँ, आई एग्री। रॉड्री शुड हैव बीन इन द टीम ऑफ द सीजन। निधि और मैंने ये हमने एक वीडियो बनाया था कि 6 लिवरपूल के प्लेयर थे, हम यही बात कर रहे थे कि रॉड्री को होना चाहिए था वो। होना चाहिए था थियागो था उसमें। व्हिच आई वाज अ एग्री। सरप्राइज फॉर मी। रॉड्री शुड हैव बीन देयर। बट लापोर्टे काफी डिसअपॉइंटेड था खुद थी, इफ यू सॉ। अब लापोर्टे यार, वाज क्वाइट वोकल अबाउट इट। हाँ मतलब अब वैसे तो कुछ भी बोल दो, क्या ही बोल सकते हैं, मतलब सी द थिंग इज इसकी वोटिंग प्लेयर्स करते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक चोजन बाय अ जूरी, तो उसमें क्या कर सकते हैं। डू यू थिंक सॉन डिजर्व टू बी इन 100%? बिल्कुल। 100%। हम ये तो मतलब पूरी दुनिया बोल रही है और सच बात है, ये होना ही चाहिए। अम, मीनामीनो कहाँ जा सकता है यार, देखिए मीनामीनो के लिए काफी ऑफर्स आ रहे हैं, जो जो सुनने में आया है कि लीड्स इज इंटरेस्टेड, शायद से इंटर मिलान ऑल्सो ने भी काफी बोला है। तो यार अगर देखो, अगर उसको प्रीमियर लीग में रहना है तो लीड्स, बट लीड्स का वही है कि इंटर मिलान इज अ मच बिगर क्लब, एंड चैंपियंस लीग में खेलने का मौका मिलेगा अगर इंटर मिलान जाएगा तो डिपेंड करता है यार उसके ऊपर, आई थिंक आस्किंग प्राइस के भी ऊपर डिपेंड करता है। अपेरेंटली वी आर आस्किंग फॉर 12 मिलियन 17 फॉर 17। 17 million, sorry, 17 million for you know for Minamino.
तो देखते हैं यार, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अम, जो भी इधर लिवरपूल सपोर्टर्स हैं, आपको क्या लगता है? अभी फाबियो कार्वालियो साइन किया है, फिर नूनेज साइन किया है। आपको क्या लगता है हम लोग नेक्स्ट सीजन भी, डू यू थिंक वील मेक द ट्रांजिशन? हम लोग को ट्रांजिशन मेक करेंगे 4-3-3 से 4-2-3-1? अपने थॉट्स बता दीजिए, विल विल टेक इट वन बाय वन। बिकॉज निधि और मैंने काफी बात की है कि शायद से 4-2-3-1 हो सकता है नेक्स्ट सीजन। आपको क्या लगता है? प्लीज लेट अस नो। बिल्कुल, बिल्कुल। um, feel Allison was our player of the season 100%। I agree यार। बिल्कुल अग्री करता हूँ मैं इस बात से। कैन यू से मोर अबाउट द कैल्विन रैम्जे डील? पता नहीं यार, मतलब फ्रैंकली उसके बारे में इतना ही पता है कि अपेरेंटली ही इज वेरी हाईली रेटेड इन इंग्लैंड। उसको हम काफी दिन से वी वर गोइंग आफ्टर कैल्विन रैम्जे, एंड लुक्स लाइक यार हमको चाहिए, बिकॉज फ्रैंकली नेको विलियम्स मुझे लगता है कि छोड़ के चले जाएगा। ही विल बी ऑफ बिकॉज ही वांट्स लाइक रेगुलर गेम टाइम। तो मतलब हमको ट्रेंड का बैकअप तो चाहिए ही, मतलब 100%। सो आई होप दिस रूमर इज ट्रू, डेफिनेटली। एंड apparently Nat Phillips भी जा रहा है, so both Fulham and Bournemouth have got promoted. या And when they moved on loan in January, the end of January, they played till the end of the season और काफी अच्छा खेले थे। So मेरे हिसाब से स्पेशली निको विलियम्स के लिए और नैट फिलिप्स के लिए हम लोग मिला के डिसेंट सम ले सकते हैं। एक अच्छा सम मिलेगा। आई थिंक यार ये तो दोनों प्लेयर शायद से विल गेट अस मोर मनी देन चेम्बरलेन। हाँ, हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली ना, क्योंकि उनका स्टॉक थोड़ा ऊपर है ना। दीज टू प्लेयर्स हैव प्लेड मोर। ऑक्स कितने दिन से खेला नहीं है, तो ऑक्स के लिए तो मैं, मतलब आई एम एक्सपेक्ट 10 मिलियन आ गया तो हो जाएगा, मतलब दैट विल बी अ लॉट। मानस के हेल्थ की काफी चिंता की जा रही है चैट सेक्शन में, मैं पढ़ रहा हूँ। किसी ने लिखा है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को कुछ बोलते नहीं क्या? मैं अकेला रहता हूँ यार। आई आई मूव्ड आउट 6 years बैक। मैं अपने माँ बाप का पैसा नहीं खाता फिलहाल। Nat Phillips is apparently going on loan because he's seen. नहीं यार, I don't think so. Nat, I think wants to play regularly. He deserves to play regularly. So I don't think he will be a backup. But मानस एक बार सोचते हैं ना, मतलब एक क्वेश्चन में तेरे से पूछना चाहता हूँ, आउटगोइंग से। लॉरिस कैरियस है ब्रो, आई विल रिवाइव दिस। हाँ, वो वही बंदा है, वो सादियो माने अभी लॉरेंस कैरिस बन के आ गए। अ, चलो, let's assume that Mane is leaving, Yep. right? Mane, Nat Phillips, Nico Williams, Minamino, uh, क्या क्या बोला मैंने? माने, नैट फिलिप्स, मिनामिनो, निको विलियम्स, जोर से ऑक्स, बोलना नहीं। हाँ। ऑक्स। आर देयर मोर आउटगोइंग्स अकॉर्डिंग टू देख, ओरिगी गया है, कैरियस गया है, वो तो गया ही यू? है। वो फ्री। हाँ। ओरिगी कैरियर्स तो खत्म हो गया भाई, उनका तो मतलब हाँ। कॉन्ट्रैक्ट भी रन हो। हाँ। बट व्हाट एल्स? ये 5 तो मेरे हिसाब से पक्का जाएंगे। हाँ। हाँ, सो आई नहीं, डू यू आर यू एक्सपेक्टिंग मोर पीपल टू लीव? देख अभी the club has to take a call on certain things यार। like I mean I don't think we can let the likes of Naby Keita and Mo Salah run out their contracts. This is my humble opinion. See, Firmino भी है, फर्मिनो, केटा, चेम्बरलेन, मो साला, माने था द फिफ्थ वन जो 2023 है। सो ये चार तो है ब्रो, which will be very interesting to see how the club approaches this, because we can't let 4 players go into the last year of the contract, and seeing it off, considering we have spent 100 odd million on Luis Diaz and Darwin Nunez. So ये चार में से चेम्बरलेन पक्का जाएगा मेरे हिसाब से। I hope Salah signs a new deal. I hope Keita signs a new deal. I hope Bobby signs a new deal. But
वो 5 पक्का है डिपार्चर लिस्ट में, आई होप नॉट मोर। यार ये मुझे आता नहीं यार सतीश, बेस कैसे कम करते हो मतलब। आई डोंट थिंक इसमें इक्वलाइजर है मेरे पास, तो आप थोड़ा वॉल्यूम कम करके एडजस्ट कर लो यार, मुझे आता नहीं है, आई एम सॉरी। बट यार थोड़ा वापस आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डार्विन नूनेज अ लिटिल बिट। यू जब तूने नूनेज को देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क, आई डोंट थिंक हम में से कोई भी पोर्चुगीज लीग देखता है, या चैट में भी जितने लोग हैं, आई डोंट थिंक पोर्चुगीज लीग कोई देखता है, बट तेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था when you saw Darwin Nunez play, and it was against us mostly, I'm thinking. देख देख when we drew Benfica, I knew for a matter of fact कि Darwin Nunez will be someone that we have to have an eye on, because मैंने एक गेम कवर की थी बारसा वर्सेस बेंफिका और उसमें वो अच्छा खेला था। आई रिमेंबर Hmm. वॉचिंग दैट, he had played well, and even in the first leg against Liverpool उसने एक गोल मारा था, but we dominated that game. Right. But एनफील्ड पे वो तो बहुत ही अच्छा खेला था, like he Hmm. played really well. And see, obviously, I was when you see a good player play against us, and I mean, you can't necessarily always say that we should be signing him or whatever. But वो Right. क्लॉप के रिएक्शंस, पोस्ट मैच इंटरव्यू में जो क्लॉप ने बोला, उससे हाँ. थोड़ा इंटरेस्ट जागा हाँ. कि ये यार, मतलब योर्गन क्लॉप ने भी बोला है कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है। Hmm. सो especially when I saw him in the second leg, I was very impressed by him. And Right. obviously, after that, his name was more household after playing against Liverpool. So उसके results follow कर रहे थे, public follow कर रही थी, उसके news आते रहते थे media में. So I don't think we should, as Liverpool supporters, feel the pressure whether he will be a flop or not. मेरे हिसाब से वो सोचना नहीं चाहिए, because मेरे हिसाब से अगर हमने इतना पैसा डाला है तो सोच समझ के ही डाला है। Hmm. First impressions of Nunez, good, quick, good movement off the ball, helps defensively as well. So I am very happy and optimistic about it. निधि तेरा क्या था? यार मेरा मैं थोड़ा बोलूं, मतलब मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि ये थोड़ा टॉम हॉलैंड विथ मोर मसल्स एंड अ मैन बन दिखता है, हाँ ऑनेस्टली दैट वाज द हाँ फर्स्ट थिंग आई थॉट। बट हाँ यार जनरली व्हेन यू आप अगर टॉल प्लेयर को देखते हो तो आप एसोसिएट करते हो कि ये टारगेट मैन होगा, या फिर ही विल बी अराउंड द बॉक्स, उस तरह का प्लेयर होगा, बट नहीं। जैसे तूने बोला कि हेल्प्स आउट इन द डिफेंस। ही ही इज द गाय हु प्रेसेस, ही इज द गाय हु इंटरचेंजेस। जैसे अगर तूने बार्सिलोना की बात की, बार्सिलोना का जो गोल उसने मारा था बार्सिलोना के अगेंस्ट, ही went wide and then he dribbles in and comes in and scores, है ना? तो he is not like typically जो लोग रहते हैं, मतलब जो typical number 9 रहते हैं, जो who will be static or just target man. I don't see Nunes like that. He is a very mobile player on the field. He is, I personally won't be surprised in, अगर हम कुछ गेम्स में देखें कि वो नंबर 9 पोजीशन नहीं भी खेल, he could be wrong, but I won't be surprised if that happens. So what are you suggesting? He might play down the left, like not. I'm not saying, I'm not holding you, accounting you for holding you accountable for I that. नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि I won't be surprised if that is tried as a Darwin Nunez as a wide player, Hmm. Thanks, right? Lala. Thank you. Appreciate it, bro. So वो ये भी है। अनुपम, हाँ हाँ, एक सेकंड, अभी मैं दूसरे स्क्रीन पे था इसलिए मैंने देखा नहीं। हाँ। थैंक्स यार लाला। Why are so many players leaving on free? Must be causing huge losses. um, एट यार द तो मोमेंट एट द मोमेंट ब्रदर, ओरिगी छोड़ के गया, कैरिस छोड़ के गया, उसके पहले एमरे चैन और जीनी वैनाल्डम, एंड दिस इज ओवर द कोर्स ऑफ 4-5 सीजंस. I don't think the club will make a mistake of letting Salah or Keita or Chamberlain go on a free. I think the club considers Bobby Firmino as an asset, and we will
लेट बॉबी फर्मिनो स्टे, एंड आई थिंक बॉबी फर्मिनो वैसे टाइप का प्लेयर है निधि, जो आई थिंक दिसंबर में भी, जनवरी में उसको अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया ना 2 साल का एक्सटेंशन, वो कर लेगा एक्सटेंड सेम प्राइस में थोड़ा सा ज्यादा। आई थिंक फर्मिनो वैसे टाइप का। 100%। यार और सी देखियो यार अनुपम, इट्स इट्स नॉट अ लॉस। देखो लॉस कब होता है ना ट्रांसफर विंडो में, कि जैसे मान लो कि आपने नेविगेटर खरीदा, ठीक है। अब नेविगेटा मान लो कि हमको बेचना पड़ जाए 10 मिलियन में। लेट्स से ही उसने वो सीजन नहीं किया होता जो उसका ये सीजन हुआ है, जहाँ पे उसने रेगुलरली खेला है ना। तो मान लो कि अब आपको वो 10 मिलियन में बेचना पड़ जाए, वो लॉस होता है। बट नहीं, नाविकेटा, बट जैसे ओरिगी है, ओरिगी हमने 8 मिलियन में कुछ लिया था, वो इतने सीजन रहा लिवरपूल में, वो काफी वेजेस पे नहीं था, तो वो लॉस नहीं है। ही प्रूव्ड हिज वैल्यू। लॉस ट्रांसफर सीजन में तब होता है, जैसे एंडी कैरल के केस में हमको लॉस हुआ था, क्योंकि हमने उस टाइम के हिसाब से बहुत पैसा दिया था और हमको उसका रिटर्न नहीं मिला। तो वो लॉस है, ये दिस इज नॉट अ लॉस। यार बेल अयान अयान इज stating since a long time Bellingham. See, I the only way Ayan, I think Bellingham could be a possibility at Liverpool is if Salah decides to leave, जो आपके display picture में है. ये Especially this transfer window तो यार मतलब चांस ही नहीं zero है। zero possibility of us even remotely being interested in Jude Bellingham. See, don't get me wrong, Jude Bellingham बहुत अच्छा player है, हम तो cover भी करते हैं, Jude Bellingham is very good, but यार वो बहुत पैसा शेल आउट करना पड़ेगा उसके लिए, और एट द मोमेंट मेरे हिसाब से लिवरपूल वो पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल नहीं यार, मतलब जूड बेलिंगम तो नहीं हो पाएगा यार वो, मतलब it will be, उतना पैसा हम नहीं खर्च कर सकते एक विंडो में। उसका बस एक ही ऑप्शन है, दैट साला हैज टू लीव एंड ही हैज टू वी हैव टू गेट मेगा मनी फॉर साला, राइट। तो नहीं कर सकते। एफएसजी लिखता है कि बेलिंगम खरीद लेंगे ब्रो। हाँ, एफएसजी ही हमको, चलो भाई, मतलब इससे ज्यादा आपको क्या अश्योरेंस चाहिए कि एफएसजी सीधा लिख रहा है। अम, सोमेंदो अगर हो गया तो फिर एपिक ब्रो, लाइक आई मीन, बट आई डोंट सी अस हैविंग जोटा, नुनेज, फर्मिनो, डियाज, साला and Jude Bellingham with Fabio Carvalho and Harvey Elliott and Curtis Jones, मतलब काफी चीजें सोच समझ के करने पड़ेंगे ना, मतलब ये फीफा तो नहीं खेल रहे कि हाँ ले लो मिल रहा है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। Manas, what do you have to say about that? What? This question. Do you think Salah will have a different role? No. Well, why would you want to change the guy who scores truckloads of goals Yeah. in that position? जो भी Yeah. बोलना है साला के बारे में आप बोलो, he is a guy who won the golden boot and the most assists award in one season. ला, ये कभी हुआ है क्या? बाय द वे, आई मे बी आई डोंट नो, मानस कभी हुआ है क्या? हो चैट में कोई सकता बता। है, आई थिंक हो सकता है। अगर ये फर्स्ट टाइम हुआ रहता ना तो बहुत पब्लिसाइज होता मेरे हिसाब से, and especially Mo Salah being Mo Salah, the type of player, the type of image that he has, it would have been very much publicized. Uh, Salah has a lot of assists. Salah has a lot of goals. Salah plays on that right flank for us. He runs down the wing. Why would you want to change that? जैसे निधि ने बोला, और स्पेशली अभी न्यूनेज है, न्यूनेज थोड़ी वाइड राइट खेलेगा, अपने पास सिर्फ एक ही प्लेयर है जो उधर बहुत इफेक्टिव है, वो साला। साला उधर ही खेलेगा, साला हैज टू प्ले देयर। 100%। Last season, Harry Kane did that, according to Most Devan. goals and most goals and most assists both. Could be, I mean, लिखा हुआ है. Could could be Could maybe. be, could be. We could be unaware of that. Yeah, yeah. So anyway, Uh, guys. So yeah, the live was to state that न्यूनेस का कल मेडिकल है, और apparently अपेरेंटली कल मेडिकल है। जेम्स पियर्स ने बोला है, पॉल जॉयस ने बोला है 64 मिलियन अपफ्रंट हम दे रहे हैं पाउंड्स, और 8 + 12 million pounds based on appearances and the trophies that we win.
FSG has splashed the cash, man. Has splashed the cash, brother. Like, uh, they always यार जब भी क्लॉप को जरूरत है निधि वो किया है मतलब. 100% यार, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि एफएसजी ने बैक नहीं किया है। अब बैक कितना भी, मतलब अब बैकिंग की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, बट विच एवर प्लेयर क्लॉप हैज आस्क्ड, अब जैसे लुइस डियाज था, वो कॉन्वर्सेशन में स्पर्स वर गेटिंग इनटू, तो एफएसजी ने तुरंत पैसा दे दिया। अब बोलने को वो लोग बोल सकते थे कि लुइस डियाज दिया ना, वो वैसे भी समर में आने वाला था, बट अभी खरीद के दिया ना, दे कुड हैव सेड दैट, बट नो, दे अगेन, मतलब विल वेट फॉर दिस टू गेट ऑफिशियल, बट लुक्स लाइक दे हैव अग्रीड फॉर अनदर, you know, 64 million upfront and Yeah. whatever in add-ons. तो पैसा तो दे रहा है, यू कैन नॉट डाउट अभी कि दे आर नॉट स्प्लैशिंग द कैश। साला का डील, वो, आई पर्सनली आई फील देयर इज मोर टू इट देन मनी पर्सनली, हम्म. बट देख यार सकते मेरे हिसाब से अभी देखिए वेज वेज ही है अभी. मेरे को तो अभी मेरे को लाइक if you think about it logically, Klopp has signed a new team. We've signed Luis Diaz and Darwin Nunez. We are competitive. We took the quadruple to the last day of the season. He has won the Golden Boot. He won the PFA Player of the Year. He's getting appreciation worldwide. He will be in the top three for Ballon d'Or. हैं। Everything suggests that he should be signing. हाँ I am मतलब not I'm not anti कोई Salah. You know that I love Salah. I love कोई Salah. हाँ, कोई पूछ So रहा है कि लाइक व्हाट एल्स, हाँ पहले तू बोल फिर मैं बोलता so so मेरे हिसाब से now money is the wage he feels he deserves more because like I mentioned, like सब कुछ यार we are challenging on all fronts. He's loved, he's appreciated, he's getting personal honors, we are making marquee signings. हूँ। तेरे हिसाब से क्या है? नहीं, आई थिंक इट हैड टू डू विथ एम्बिशन, जो कि एक बात भी आई थी। अब अभी वी हैव शोड एम्बिशन, यार Yeah. हमको पता नहीं ना, मे बी अ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, हु Yeah. नोस, Yeah. राइट? हम ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, ये दिस इज अ बैड कॉन्वर्सेशन, दैट लाइक मतलब नेगेटिव ही चल रहा है। मे बी अ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन द बैक मे बी। Yeah. उसको बोला कि देखो, माने इज गोइंग टू लीव, we want you to be retained, we'll, maybe there is a negotiation going on about the wages, Yeah. and I think it had to do with ambition which we have shown. तो logically speaking तो साला को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। आई डोंट थिंक अभी साला के लिए लिवरपूल से बेटर कोई जगह है, Hmm. क्योंकि राइट विंग पे इट्स नॉट लाइक ही इज इवन चैलेंज्ड फॉर हिज पोजीशन। राइट विंग पे उसका पोजीशन इज गोइंग टू बी, ही इज गोइंग टू प्ले देयर। तो काफी इंटरेस्टिंग है यार देखने के लिए, मतलब आई रियली होप ही साइंस, लाइक एवरी लिवरपूल supporter, I absolutely love Salah. So I hope that he signs a contract and he's retained, because we need Mohamed Salah on the right wing and Mohamed Salah needs us. It's a perfect match. It's a perfect match, and this mini transition that we're having, the real front three was Firmino, Mane, Salah. Mane leaving, so this signing of Nunez ये इंश्योर करता है कि माने जा रहा है, ये बात तो पक्की है. एंड फर्मिनियो का रोल कम हुआ है. सो ये जो ट्रांजिशन है उसमें वी नीड that familiarity, that solid, that ever present player that is Mo Salah for me. Like Mo Salah has to stay. मानस निधि जी, आप बोलो किसको खरीदना है, मैं नोट्स बना रहा हूँ. If only, सोच अगर ये सच में सच है तो। मतलब हिंदी में बढ़िया। बात कर रहे हैं. हाँ, और सोच मतलब सच में वो हिंदी में बात कर रहा है, तो यार वही है। साला का फिलहाल कोई बैकअप भी नहीं है। राइट विंग पे वी डोंट हैव अ प्लेयर हु इज रेडी, दैट्स द रियलिटी।
So I really hope, Ishank Sala plays on the right wing, not on the left wing. तो फिलहाल उसका कोई रेडी बैकअप नहीं है. We have certain young players who are promising, जैसे कि Harvey Elliott on the right wing, but for Harvey Elliott it's way too ahead. साला का लेवल तो दूर की बात है, स्टार्ट करना ही काफी मतलब बड़ी बात हो जाएगी. बट आई या मीन हावी एलिट का जो लव भी है वो साला, अगर तूने एफए का फाइनल के बाद देखा, वो जो साला का मास्क पहन के like he's celebrating, so he certainly looks up to Salah a lot. And I think next season in love you Lala, I think next season we will see Harvey Elliott start more games in place of Salah. This is what I feel. जब साला को रेस्ट हो रहा है शायद से हार्वी एलियट ज्यादा खेलेगा, because I am not a big fan of Mane, Jota, Luis Diaz playing on the right. ना Uh, ना I would, and especially if you're playing in an F League Cup game or FA Cup game or a match day 5 or match day 6 of the Champions League, where if we have finished first already, I would rather play Elliot there. But that is just me, man. Anyway, निधि एक घंटा मतलब हो गया, उसके पहले एक और घंटा हम लोग अंकित के चैनल हाँ पे थे, आज तो हाँ ओवरडोज हो गया भाई. हाँ हाँ. एक क्वेश्चन है भाई साला के जैसे, यार साला ने भी एक इंटरव्यू दिया था. दैट मैन पनिशेस हिमसेल्फ, ओके, मतलब वो Really? लेवल का. अभी उसने इंटरव्यू दिया था एंड ही डिटेल्ड उसने हाउ ही ईट्स एंड ऑल दैट. इट्स it's it's not possible for most people in the world, मतलब to have that kind of dedication. मतलब he literally punishes himself to be what he is. तो यार काफी है यार. मतलब That is why he's Mo Salah. हाँ, मतलब साला के जैसे बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको साला का मेंटालिटी लाना पड़ेगा. एक्सरसाइज और डाइट तो बात की बात है, बट हाँ. यार अलग लेवल. चल निधि, let's end this. Yes, yes, yes. So thank you guys. This was Menace in the Monk. We were talking about the likely transfer of Darwin Nunez to Liverpool and a lot of other things. Even more Uh, likely now. हाँ, even more likely. But देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है. ठीक है. हाँ. चलो. Chalo, see you guys. Take care. And if We'll you've not subscribed, please do subscribe to Menace and the Monk and like the stream, man. See you guys. Take care.